Hello everyone. In this lecture, we will study the geotechnical engineering. In the previous class, we completed our continuation chapter. So, we will move to the next chapter. The chapter is shear strength of soil. Shear strength of soil. Generally, shear strength is determined by our shear stress, the tau term. Okay, so that strength is generally defined by two parameters. One is by frictional strength, another one is cohesive strength. Okay, frictional strength means what? The interparticles attraction. Okay, the interlocking strength, that is called frictional strength. Interlocking means it is obvious that this strength is governed by our coarse grained soil. Okay, yes or no? Because in the bigger particles the interlocking will be there, the frictional will develop at that moment, not in case of cohesive soil. कोहेसिव सॉइल में तो बिगर पार्टिकल्स नहीं रहता, इंटरलॉकिंग नहीं रहता उसमें, तो उस केस में कोहेसिव स्ट्रेंथ उसको डिफाइन करता है. तो obvious, it is quite obvious that frictional strength is generally seen in case of coarse grained soil, and our cohesive strength is given by in a cohesive soil. Okay, so this is the shear strength. Shear strength, if the soil will loose, then it will wash away with water. Okay, the strength, if you lose it, then the soil is not stabilized and the strength of the soil is reduced, the bearing capacity is reduced, all related to our shear strength only. So that is, I already told, it is depend on the shear stress, how much stress the soil can bear. So that shear stress is defined by tau. So for this shear strength, two scientists give their theories. One is Mohr's theory, another one is Coulomb theory. Okay, so first we will see Mohr's. Mohr's theory. Okay, Mohr's theory of shear strength. So मोर क्या बोलता था? मोर सर्कल तो मैं पढ़ाया था, तुमको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में है कि नहीं? मोर सर्कल इज डिफाइंड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन shear stress and normal stress. Yes or no? So in this case, if I want to draw a series of Mohr circle, suppose like this, कहीं भी कैसे भी अगर ड्रॉ करूँ, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, थोड़ा वेरिएशन डालते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सपोज एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे मोर्स क्या बोला था? जो shear स्ट्रेस है वो बस फंक्शन ऑफ सिग्मा है. यस और नो? The shear stress is a function of normal stress. It is given by Mohr, है कि नहीं? ये पढ़े थे ना हम Mohr सर्कल. तो यहाँ पे अगर Mohr सर्कल, तो ये क्या था? ये तो जीरो ही छोड़ो, पर ये क्या है? माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये मेजर, ये सर्कल का ये माइनर, ये मेजर. यस और नो? तो यहाँ पे माइनर को जनरली सिग्मा 3 डिनोट करते हैं और मेजर को सिग्मा 1. तो ये सिग्मा 3 डैश, ये सिग्मा 1 डैश, ऐसे करके नोटेशन हुआ. ये क्या है? तुम्हारा फेलियर एनवलप है. इसके ऊपर तुम्हारा स्ट्रेस नहीं जा सकता, फेलियर हो जाएगा उसके. ठीक है, तो ये बोला तुम्हारा मोर्स. ओके, फिर कूलम क्या बोला? कूलम थ्योरी. कूलम ये बोला
shear stress is equal to C plus sigma 10 phi। कूलम ये थियरी दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या, shear stress इज इक्वल टू कोहेसिव स्ट्रेंथ प्लस नॉर्मल स्ट्रेस इंटू 10 इंटू 5। ओके, सिग्मा तुमको पता था नॉर्मल स्ट्रेस है, तो यहाँ पे दो टर्म एक्स्ट्रा है, वो है C और phi, जो तुम्हारे लिए नया है। तो C का मतलब क्या है, कोहेसिव स्ट्रेंथ, ओके, कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। phi का मतलब एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है C और phi फॉर केस ऑफ सॉइल। ओके, सो C इज डिफाइंड एज द कोहेसिव स्ट्रेंथ। कौन से सॉइल के ज़्यादा रहेगा, ऑब्वियसली कोहेसिव सॉइल का ज़्यादा रहेगा, लाइक क्ले एंड सिल्ट। ओके, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन किसका ज़्यादा रहेगा, जिसका फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ ज़्यादा है। मैं बोला था पहले ही फ्रिक्शनल और कोहेसिव स्ट्रेंथ डिफाइन कर दिया, जैसे कि कोर्स ग्रेन सॉइल में, ये कोर्स ग्रेन सॉइल में रहेगा मेजर, ये फाइन ग्रेन सॉइल में रहेगा। तो मैं तुमको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर एक कोहेसिव सॉइल है, प्योरली कोहेसिव सॉइल, वहाँ पे C नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज C विल एग्जिस्ट बिकॉज ये कोहेसिव सॉइल है, बट phi क्या होगा, 0 होगा उस केस में। कोहेसिव सॉइल और फाइन ग्रेन्ड सॉइल सब सेम है। और एक टाइप का क्या सॉइल है, कोहेजनलेस, सपोज कोहेजन लेस सॉइल, या फिर उसको बोलते हैं कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। उस केस में क्या रहेगा, कोहेसिव स्ट्रेंथ तो कुछ रहता ही नहीं है, तो 0, पर phi नॉट इक्वल टू 0। ये याद रखो, नहीं तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये दो को जोड़ दिया गया और बोला गया थर्ड थ्योरी, दैट इज मोर्स कूलम्स थ्योरी। तो ये पहला, ये दूसरा, फिर तीसरा पढ़ेंगे। ये पहला, ये दूसरा थियरी, तीसरा थियरी को दोनों कंबाइन कर दिया, वो बन गया मोर्स कूलम हाइपोथेसिस थियरी। ओके, थर्ड टर्म मोर कूलम थियरी। इसमें क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है। सपोज एक मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, उसमें दोनों क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों को कंबाइन करते मोर कॉलम थियरी हो गया। तो यहाँ पे मोर सर्किल पहले दिया था, वो मोर थियरी था, और कूलम क्या बताया, C और phi का कॉन्सेप्ट, और दोनों को यहाँ पे देखो कंबाइन कर दिए हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, टाउ इक्वल टू C प्लस सिग्मा 10 phi। इक्वेशन सेम रहा, पर कूलम थियरी में हमारा मोर सर्किल ऐड नहीं हुआ था, यहाँ पे ऐड हो गया मोर सर्किल। ओके, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो होता है कोहेसिव स्ट्रेंथ, और जो एंगल बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, दैट इज एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, दैट इज phi। ओके, दिस C and phi also called total stress parameter or effective stress parameter. If you use C dash and phi dash and here sigma bar, then it will be effective stress parameter C and phi, C dash and phi dash. But if you use C and phi in sigma, then it will be total stress parameter. Okay. ओके, इन जनरली अनड्रेन्ड कंडीशन, मतलब जहाँ ड्रेन नहीं हो रहा है, कांस्टेंट होते जा रहा है, उस केस में टोटल स्ट्रेस आएगा, और ड्रेन कंडीशन में इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम हमेशा याद रखना, यहाँ पे दो स्ट्रेस जनरली एक्ट होता है कि नहीं, यह सिग्मा 3 और एक
सिग्मा 1, सिग्मा 3 क्या है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और सिग्मा 1 क्या है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस. यस और नो? Okay, so like this, if you want to calculate the sigma 1, you can calculate by using a formula sigma 3 n phi plus 2c root over n phi. If problem it will ask, okay, so now what is n phi here? N phi means 10 square 45 plus 5 by 2 or 1 plus sin phi by 1 minus sin phi. Okay, this is n phi. This formula you have to remember. Clear? So here in this case sigma 1 is major principal stress, sigma 3 is minor principal stress, C is cohesive strength, n phi is a parameter which is defined by this formula. Okay, phi means you know already, angle of internal friction. Clear? If someone will tell to calculate the value of sigma 1, the major principal stress for a cohesive soil, cohesive soil में क्या होगा, phi 0 हो जाएगा but C exist करेगा और C का वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो you can easily find out sigma 1. Okay, so in another case, if it will give you the cohesion less soil या fine grained soil, coarse grained soil, in that case C will be 0. fine grained या cohesive soil दिया रहेगा तो C exist करेगा, phi 0 डाल देना जो बताया था. अगर coarse grained soil और cohesion less soil रहता है तो C 0 कर देना, phi exist रहेगा. ठीक है, phi का वैल्यू दिया रहेगा तुम जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन रहता है. ठीक है, ये रहता है तुम्हारा फंडामेंटल थिंग्स. Okay, in this chapter there are different tests like direct shear test, triaxial test, unconfirmed compression test and vent shear test. Okay, the 4 tests are there in your syllabus. Okay, so these tests in theoretical it is difficult to explain in online class, but I try to make you understand. In the next class I will explain the 4 experiments. Okay, then this chapter will be over. This is just a fundamental thing I just covered in this class. If any doubt till then you can ask me. Okay.